दुनिया में इंसान तो बहुत है मगर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और ये साबित यहाँ से होता है कि जो बेजुबान जानवर हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे पे डिपेंड करते हैं, फायदा तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इट्स अबाउट यू योर सेल्फ, कि आप असल में कैसे हो। डू यू फील फॉर क्रिएशन ऑफ गॉड? क्या आपके दिल में एहसास है? वो अलग बात है कि आजकल तो लोग इंसानों का एहसास नहीं करते, तो जानवरों का कहाँ ही करेंगे। बट द क्रुएलिटी इज ऑन इट्स पीक। कीपिंग इन व्यू के पिछले महीने, इस एक महीने में कितना कुछ हो चुका है। Just think about the camel incident, the puppy incident, or the donkey incident, and the many other incidents that are not on the camera, that are not caught on the camera, that we don't know of, are still there. I mean, I saw this incident in Karachi, जहाँ पे उन्होंने एक डॉग को बिल्डिंग की छत से सिर्फ इसलिए फेंक के मार दिया because it was just roaming around, or let's just say for existing. I think ये काम साइकोपैथ्स के अलावा कोई नहीं कर सकता. And if this is happening from a small age, if you see children around you doing this, being cruel to animals, trust me, they have a psychological issue that is growing inside and can result into something troublesome. आप जितने भी serial killers हैं, उनको उनकी history वगैरह निकाल लो, they were always cruel to animals. If a person is not affected by causing harm to anything that is living, I don't think so he or she would ever care about humans as well. If you cannot do anything for those poor animals, try not to at least harm them. Trust me, they also have a beating heart and they have emotions. Take it as a joke, their life as a joke, their emotions as a joke. But trust me, they are better than us.